मिसाइल है। Session. I am writing to draw your attention to a very serious situation that seems to be developing. You know of the long-standing agitation for banning slaughter in the last session of the parliament. Also, this issue had figured. I understand that Hindu religious leaders of top stature, such as some of the Kushambi. मम्मी पापा जा रहे हैं। एक साक्षात्कार के लिए अपने आवास से उसी परिसर में स्थित अपने कार्यालय की ओर चली। उन्होंने सुरक्षा नियमों के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखा था। क्यों? जैसे ही वो अपने परिसर से गुजरी, उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों ने एक स्टेन गन और एक रिवॉल्वर का उपयोग करते हुए ठीक 9:29 पर उनके शरीर में 30 गोलियां दाग दी। अच्छा काम तो करती है इंदिरा गांधी। आपने क्यों बोला कि वो अच्छी नहीं है? दोनों को निहत्था कर दिया गया और हाथापाई के क्रम में उनमें से एक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। उनमें से एक की? प्रधानमंत्री को गोली मारने वाले जीवित सुरक्षा गार्ड पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई तथा 1989 में उसे फांसी दे दी गई। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर सायंकालीन समाचार में उनकी हत्या की घोषणा की गई। अच्छा काम तो करती थी इंदिरा गांधी। आपने क्यों बोला अच्छी नहीं है? सब लोग को कोई खुश कर भी नहीं सकता। अच्छा काम कर। ये उसका बेटा है ना, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा है, तो वो अभी ऐसे काम क्यों कर रहा है? की खबर फैली, आक्रोशित भीड़ सड़कों पर हिंसक हो गई। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। विभीषिका की ओर ले गई। 3 नवंबर 1984 को पूरा देश रो पड़ा। अरे और 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पर कतारबद्ध खड़े थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर को 3.5 घंटे की अंतिम यात्रा के साथ यमुना के तट पर लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र श्री राजीव गांधी ने उनकी चिता को अग्नि दी। तो राजीव गांधी क्यों नहीं आया पॉलिटिक्स में? उससे तो बहुत सपोर्ट आया था, उसे भी तो मार दिया। फोटो आ रही है। क्या हो रही है? फोटो आ रही है। 1918 में तत्कालीन बम्बई प्रांत के विल्सन कॉलेज में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अहमदाबाद में 12 वर्षों तक डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। वे नौकरशाह के रूप में लंबा कोट, पतलून और पगड़ी पहनते थे। श्री मोरारजी देसाई का विवाह गजरा बैंड से हुआ था। वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, किंतु भाई बहनों की शिक्षा और बहन की शादी की चिंता ने उन्हें नौकरी में बनाए रखा। 12 मार्च 1930 को एक नया मोड़ आया जब श्री मोरारजी देसाई महात्मा गांधी की दांडी यात्रा देखने के लिए गए। इस यात्रा के समाप्त होने तक उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनकी जगह अब सरकार के भीतर नहीं है। उन्होंने नौकरशाह के पद से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी से जुड़ गए। श्री मोरारजी देसाई अक्टूबर 1930 में पहली बार जेल गए। क्यों? बाद में उन्हें 4 बार जेल हुई। क्यों? उनकी ईमानदारी और उनकी कमजोर व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति से परिचित गांधी जी ने एक बार मोरारजी भाई से पूछा कि क्या वो सरकारी सेवा में वापस जाना चाहेंगे, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जब तक भारत को स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उनके स्वतंत्रता संग्राम छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने देखा कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता।
पर्सनल पेन ऑफ श्री मोरारजी देसाई. तुलसी माला. ये सब है किसकी? गांधी टोपी. ओह ये वही है. His father, Ranchhodji, headmaster of an English middle ये school. कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है शायद. तियारी. Environment of लेटर रिटन इन गुजराती. कहाँ तो लिखा? श्री जी ये लिखा. हाँ. श्री जीवी माया माया. लंकर डेटेड दिसंबर आजा आजा मम्मी गई. ओह वाह. इंडियन ड्रेस पहन के आओ. ओह वाह. वो यही ऊपर था ना वो जो एंट्रेंस में दिख रहा था. हाँ क्या लूँ? पापा कहाँ है? ऊपर चढ़ने के लिए. She had achieved her mission, the brutal assassination of a young वाह मस्त है ना. यहाँ किसने रख दिया? ओह पापा कहाँ है? निधन हो गया. किनका? निधन कैसे हुआ था? विश्वनाथ प्रताप सिंह. किडनी बीमारी से पीड़ित थे. हाँ मोइलोमा और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे. क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री तो उनका राजीव रिस्पॉन्स गांधी कैसे मरे वो जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो होगा. वहाँ वो है पीसीओ. पीसीओ में बात कर सकते हैं. आँख लाल हो रहा है बेटा. नहीं बहुत इम्प्रूव हुआ है. चुभ रहा है. चुभ रहा है. दवाई ले आते. श्री चंद्रशेखर following a battle with cancer. चंद्रशेखर एट राष्ट्रपति भवन आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन. चंद्रशेखर ने रिज़ाइन किया था प्राइम मिनिस्टर के पद से. कुछ में आया था ना. भूख लग रहा कौन है? सोनिया गांधी. What are you doing? इंडिया becomes free in 1947. आज़ाद हुआ है ना. श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप शपथ लगाए. बलवीर सिंह दोसांझ की नेतृत्व भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मेलबर्न ओलंपिक में मिला था. राष्ट्रीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ. ओ 26 नवंबर 1947 संविधान का अंगीकरण. भारतीय गणराज्य. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट प्रेसिडेंट. IIT खड़गपुर फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश. सबसे पहले वो ही सबसे पहले बना. कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ. फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड. रेडियो नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण एशिया का विशाल. फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया. ये तो याद ये सब डेट वेट तारीख वारीख सब है ना. ये सब क्वेश्चन तो आते हैं. फर्स्ट जनरल इलेक्शन. प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951. वो तो ले ही नहीं रही है तू डेट उठ कुछ. प्रथम लोकसभा का पहला मंगलयान कब लॉन्च हुआ था?
विश्वविद्यालय अनुदान ले लिया। श्रीमती विजया लक्ष्मी महासभा के अध्यक्ष बने सबसे पहले। भारत चीन पंचशील संघ भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HIC HEC Untouchability of India. ये सही करा पता है AIMS New Delhi, first All India Institute of Medical Sciences established. मेडिकल आया 1956. Hirakud Dam. 1957. The decimal system of currency introduced. टेलीविजन आया 1959 में। सत्यजीत राय's फिल्म अपूर संसार wins Golden Lion Award in Venice. रूरकेला स्टील प्लांट इनॉग्रेटेड। राउरकेला कब बना था? 1959 में। स्टील प्लांट। Arati Saha, first Asian woman to successfully swim across the English Channel. Bhilai steel plant inaugurated. Milkha Singh 400-meter race. IIM Kolkata. 60 की कहानी है। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो कहाँ है? झारखंड में ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दुर्गापुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री इनॉग्रेटेड। दुर्गापुर मिर्ज़ापुर था ना, सॉरी। मिस रीता फरिया, फर्स्ट इंडियन मिस। नो 1968 पंडित रविशंकर। मिस वर्ल्ड। रीता फरिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। फुल फॉर्म है। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बैंक्स नेशनलाइज। बांग्लादेश लिबरेशन एंड वॉर। मुरलीकांत पेटकर, पैरा स्विमर, वन गोल्ड इन 50 मीटर फ्री स्टाइल। The Simla Agreement signed by Srimati Indira Gandhi and Pakistan President Zulfikar Ali Bhutto. First international telephone exchange. Call center. Activist Sundar Lal Bahuguna started the Chipko movement. Aryabhatta, first Indian satellite launched. Abolition of bonded labor. मजदूर का उन्मूलन 1976 में घटा दिया। पहले बंधुआ मुक्त चलता था भी 1976 में खत्म किया। इससे आज़ादी कब मिला? 1976 में। इसके पहले लोग ऐसे रखते थे, काम करते रहो। बांध मतलब बंधुआ जा नहीं सकते आप। Durga, India's first test tube baby. Mother Teresa awarded the Nobel Peace Prize. Prakash Padukone, men's singles, first Indian to win All England Open Badminton Championship. कुछ साथ में चलो। कलर टीवी आ गया। वो टीवी कब बना था? टीवी मेहंदी लेती थी कलर टीवी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, ऑस्कर फॉर गांधी। कुछ साथ चलो बेटा। उसकी टाइमलाइन आगे बढ़ चुकी है। कपिल देव लीडिंग इंडिया टू विन इट्स फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप 1984। राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट 1986। PT उषा, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अग्नि 1 मिसाइल टेस्टेड। कोतयम केरला। ओ ये तो फर्स्ट फुली लिटरेट वाह डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। वाह, हाँ, तभी वहाँ पे इतना ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले मेडिकल कॉलेज भी है। कोटयम। तू क्यों टच कर रही है फिर? हिपोक्रेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यार। वाह, अग्नि 2 इंग्लिश जाती है। The first test of the new Agni 2 intermediate range ballistic missile took place. कब आए? कल तेरी बात पर। स्कूल की घंटी बज गई है।
अटारी बॉर्डर जहाँ हम गए थे, अटारी बॉर्डर गए थे, अटारी बॉर्डर गए थे पापा, अटारी बॉर्डर गए थे ना, अटारी बॉर्डर है ना वो? बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर एक ही जगह का नाम है। बाघा बॉर्डर पाकिस्तान पड़ता है, अटारी बॉर्डर इंडियन पड़ता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। चेन्नई है। ये तो इंडिया गेट तो हाँ, इंडिया गेट। कोलकाता ऐसा दिखता है, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। और कोलकाता का कोलकाता का वो थोड़ा सा ब्रिज कोलकाता वही भूल है बस। ब्रिज है वो। ठनाव का है। दिल्ली में इंडिया गेट, ये क्या है? चेन्नई में क्या है? ये क्या है? मुंबई क्या नाम है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से कहते गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चेन्नई का क्या है? लिखा चेन्नई क्यों है क्या ये? वो रन लिखा और यहाँ बोल रहे हैं वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मई 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने 16,000 से 18,000 चलो अंदर चलते, अभी स्टार्ट हुआ है। कारगिल के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला में अपने सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले के साथ एक बार फिर सैन्य आक्रमण का सहारा लिया। हाईजैकिंग एंड टेररिज्म। हैंडराइटिंग गुजरात। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर इंजन एनर्जी कॉर्पोरेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल जर्नी। मेजर पॉलिसीज। The Dodge was as usual full of Indian and foreign players. दबा। GSLV एक बार में एक ही बटन दबाएंगे। हाँ तो दबा दिया बटन। नॉइस। कोशाम्बी तो देख ही नहीं रही है। जानकारी भी मिलेगी। Two governments were sworn in but could not survive. क्या हुआ? ऑपोजिशन CTBT सही में चल गया है। ये देखो भाग गई। कहाँ है पानी? पानी पीना है मुझे। ड्रिंकिंग वाटर। ये रहा, ये रहा। जर्नी। India's nuclear journey started with the founding of the Tata Institute of Fundamental Research in 1945, with Dr. Homi Jahangir Bhabha as director. Dr. Bhabha played an influential role in persuading Prime Minister Jawaharlal Nehru about the importance of nuclear energy in India's progress. The Atomic Energy Act, passed on 15th April 1948, laid the foundation for utilizing nuclear energy in the nation's development. On 10th August 1948, the Atomic Energy Commission, AEC, was set up directly under Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, with Dr. Bhabha as the chairman. Dr. Bhabha formulated India's unique three-stage Indian nuclear power program. In August 1955, Dr. Bhabha presided over the first United Nations Conference on the peaceful uses of atomic energy, held in Geneva. Dr. Bhabha asserted before delegates from 72 nations that atomic energy was much more than an important asset. It was an absolute necessity for the full industrialization of underdeveloped countries. India's nuclear energy program was designed for peaceful purposes.
4th August 1956, India became the first Asian nation to have a nuclear reactor with the successful commission of Apsara, a 1 megawatt thermal MWT swimming pool type reactor. On 20th January 1957, the Atomic Energy Establishment Trombay, AEET, was dedicated to the nation by Pandit Nehru. It would later be renamed the Bhabha Atomic Research Center in honor of its founder. Cyrus, Canada-India Reactor Utility Service, a 40 megawatt thermal reactor made in cooperation with Canada, achieved criticality at Trombay on 10th July 1960. On 16th October 1964, China conducted its first nuclear test with a yield of 22 kilotons and joined USA, Soviet Union, Britain and France as a nuclear power. India now faced a direct strategic threat from a hostile neighbor. However, India's declared policy did not change. It would continue to use nuclear energy only for peaceful purposes. After Dr. Bhabha's untimely death in an airplane crash on 24 January 1966, Dr. Vikram Sarabhai became the chairman of AEC. Under Dr. Sarabhai, India's first nuclear power plant in Tarapur, Maharashtra, began commercial operations on 2nd October 1969 with an initial electrical power capability of 210 megawatts. Prime Minister Srimati Indira Gandhi resisted formidable international pressure and refused to sign the discriminatory Nuclear Non-Proliferation Treaty, which would limit India's strategic options. On 18th May 1974, Prime Minister Indira Gandhi gave the nod for Operation Smiling Buddha, in which India conducted a successful 12 kiloton peaceful nuclear explosion. Dr. Raja Ramanna was the director, and Dr. H.N. Setna was then the chairman of the AEC. Following India's limited capacity test, the United States stopped the supply of enriched uranium that was used as fuel at the Tarapur Atomic Power Station. This was a part of the bilateral nuclear cooperation agreement signed between India and the United States on 8th August 1963 and was to remain in force for a period of 30 years. This proved to be a blessing in disguise, as India became self-reliant with a completely indigenous nuclear program. India entered a new phase of defense deterrence during Prime Minister Rajiv Gandhi's tenure, with the first ever test firing of its tactical surface-to-surface missile, Prithvi, in February 1988. India also conducted a test of its long-range missile, Agni, on 22nd May 1989. A new chapter in India's nuclear journey was scripted in 1996 under the leadership of scientist Dr. APJ Abdul Kalam and Prime Minister P.V. Narasimha Rao, with the induction of Prithvi-1, India's first missile capable of carrying nuclear warheads, into the Indian Army. Neither Shri Rao nor successor Prime Ministers signed the discriminatory Comprehensive Test Ban Treaty. In March 1998, Shri Atal Bihari Vajpayee took the bold step that transformed India's security capabilities. He authorized the nuclear tests that made India the world's 6th nuclear power. On 11th May 1998, India successfully demonstrated its prowess by conducting 3 underground nuclear tests. Nuclear physicist Dr. Anil Kakodkar was the director of BARC and Dr. R. Chidambaram was the chairman. नहीं अंडरग्राउंड में न्यूक्लियर टेस्ट किया. Simultaneously, Prime Minister Vajpayee announced a no first use policy. The United States imposed fresh sanctions on India, but Prime Minister Vajpayee's innovative diplomacy persuaded the world to recognize India as a responsible nuclear weapon state. Under Prime Minister Shri Manmohan Singh, India signed the 123 Civil Nuclear Agreement with the United States of America on 11th October 2008.
India agreed to separate its civil and military nuclear facilities, and the United States agreed to provide full civil cooperation, acknowledging that India was a responsible member of the world's nuclear club. In 2018, India's first nuclear-powered ballistic missile submarine, INS Arihant, completed its first deterrence patrol. With that, India joined the list of nations with nuclear triad, the capability to launch missiles from land, air and undersea. In June 2017, Prime Minister Narendra Modi approved the construction of 10 indigenously developed 700 megawatt pressurized heavy water reactors, PHWRs, in fleet mode. The Department of Atomic Energy's non-nuclear applications have made significant contributions to society. DAE research centers have developed a low-cost membrane-assisted technology for desalination and purification of contaminated water for drinking purposes. It has also developed 42 new varieties of crops using radiation-induced mutation breeding with a higher yield, seed size, early maturity and resistance to biotic and abiotic stresses. DAE's research centers have developed Babatron-2, a low-cost telecobalt radiotherapy machine, cesium-137 pencils for blood irradiation, and India's first indigenous ruthenium plaque for eye cancer therapy. India's nuclear journey, which commenced with Dr. Homi Jahangir Bhabha, continues to power India and transform lives. Completed. अच्छी थी। क्या हुआ? अरे मम्मी के लिए कॉटेज चीज बर्गर लिया था, उसमें बोल रहे थे प्याज नहीं होगा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया इसलिए।